whatever he has realized is final. So much the world, so many religions came, so many philosophers came, so many incarnations came. World is as it is. It was my luck, whatever I have realized, because my spiritual father gave me orders, change the teaching before leaving the physical frame. I have done it. I don't say that people should follow me. No, I have got no desire. I am being dragged to fulfill the order of my spiritual father. Suppose whatever if I have said, it is wrong. I am not responsible. Why my spiritual father gave me this work? I did not like to do this. I went to Hazur Baba Sawan Singh in 1942 and I told him that I don't want to do work, and why? I will say the truth. You carry on, I will support you. So suppose if I have done anything wrong in my life, I don't think I am to blame. My spiritual father is to blame, or Baba Sawan is to blame. Why they have given me this work? I never wanted to be a guru. When you tell yourself to speak the truth, my conscience is clear. But that's all. If anything you want to, anybody wants to. Dr. Rodneiser, would you like to say something and then questions? You please translate in Urdu. पहले वो कहते हैं कि मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ. I think the great question is what he has said to be pointed in the right direction. The thing that confuses me is how do we know whether we're attempting too much with our limits and our karma and the time we have left in life? How do we know when we're attempting too little? इसका तर्जुमा करो ना. हाँ, वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने अपने कर्म जो हैं ये समझना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ तक कर्म मैंने अच्छे कर लिए हैं. क्या इससे आगे जो कर्म करूँगा वो मेरे लिए ठीक होंगे या नहीं होंगे? कहाँ तक कर्म कहाँ तक करे आगे? अच्छा, आगे. What is question? This is a question. Yeah. Any other question you want to? I will great question. We all know that we want to grow spiritually. We want to help other people grow spiritually. But how do we know that we're not confused by pride in attempting more than we're able to attempt? Or how do we know whether we're being timid and cowardly and not attempting enough with our limits and with the time we have left in life? वो कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति करें और दूसरों को भी सहायता दें, लेकिन हम इस बात के करने में भी कि हम ये कर रहे हैं, इसमें हम अपना ईगो नहीं माने कि कैसे हो सकता है कि कहाँ तक हम काम को करें. Now, if we want to be free from the karma, there is only one way. That if we go beyond the region of the mind at the time of our death, if we see light and sound, all whatever sins or good or bad we have done in this life, it will have no effect. Why? The self will leave this plane. As any crime if I do in India, if I go to America, the American law will not catch me. In the similar way, the karma effect is only in the mental region. Therefore, in Sanatanis and Sant, they say, meditate on light and sound. You understand? Now listen to me. At the time of your death, if light comes or sound comes, then you will not come back in this earth. But if any figure comes, Christ comes, Baba Fakir comes, Rama comes, because that Rama and Baba Fakir is made by your own mind. So you are not beyond the mind. You will be coming back. You understand me what I say?
So in our Hindus, when a man dies, they keep a lamp for 10 days at the place where he died. Why? That the soul of the dead man, he was told in his life that your end is light and sound. It's just to remind it. This is one thing. As regards service to humanity, I don't know books. I say myself. It is the, I think, 18th year that this temple is made. I have never dreamt this temple. No satsangis have ever come in my dream. But railway and telegraphy, my father, my mother, my son, my wife, they still come in my dream. I cannot remove it. Why? This work which I do is unselfish. I have got no attachment with this work. Their impression is not on my brain. But because I served for the belly's sake in first great war, and I got meritorious services, King George certificate, appreciation. But those, I loved my father, I loved my wife, I loved my mother, those do not leave my brain. Why? Because I have done it for my personal sake. So those men who work in this line, unselfishly, their action, whatever they do, will not come on their brain. I think I have tried my best to explain myself. Is it clear now? It will not be recorded. There is something that records in the brain what we do. You see, I never say what the book says. I say what I have realized. I try my best that these dreams may not come. But in dream, railway, telegraphy, Basra, Baghdad, I have been in America, Canada. You people, I have never dreamt you. Yeah. These men are there. I have never dreamt them. They never come to me. But railway and telegraphy, Basra, and my mother or father or my wife, they do come. I don't know. I can't say. But, well, brother, आप मेरे भाई हैं, मुझे कोई दावा नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा. I do not say what will be my end. It is His will. Suppose at the time of death, if I go in a dream, what will happen to me? But we can't say anything. Everything is His will. राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय. सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 11 अप्रैल 1981. हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार के प्रातःकाल के समय में प्रवचन. आज डॉक्टर H.H. शर्मा तथा उनके निकटवर्ती अनुयायी अमेरिकन लोग भी पधार रहे हैं. उनकी प्रतीक्षा है. मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक. व्यक्तियों का पता लग जाता है. मेरे सामने बानी पड़ी है, पर्वत बानी को सर को मैंने नशे में पड़ गो बागे सतगुरु मोरी चूक संभारो. नशे पड़ दे सतगुरु मोरी चूक संभारो. हो अधीन हीन मति मोरी, चरणन ते चित टारो. मन कठोर कछु कहा ना माने, बहुआ को कही हारो. तुम ही ते सब हो तुम साई, या को बेग संवारो. अब दीजे संगत सतगुरु की, अब दीजे संगत सतगुरु की, जाते होए निस्तारो. अब समझ गए तुम
देखो ना, तुम लोग यहाँ आए हो, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी है। मैं दुनिया में मत्थे टिकाने के लिए नहीं आया। ये तुम्हारे सामने कबीर का शब्द है। वो कहते हैं मेरी यहाँ गलतियां हैं बहुत सी, तो वो गलतियां कैसे दूर होगी? सत्संग में जाए। इतनी बात है और तो कुछ नहीं। अब तुम सोचो कि हम गलतियां क्या क्या करते हैं। हमारी गलतियों से हमारा क्या नुकसान होता है? हमारे मन को अशांति आती है, फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। भवसागर है क्या? मन के ख्यालात जितने हमारे अंदर उठते हैं, ये सारे का सारा भवसागर है। जो कुछ भी हमारे अंदर ख्यालात, विचार, जो कुछ भी उठते हैं, वो क्या है? वही तो भवसागर है ना, और तो कुछ नहीं है। और है तो मुझे बता दो। तो आप लोग सत्संग में आए हैं, मैं सत्संग कराता हूँ। मैं अपनी ज़िम्मे ड्यूटी से मैं क्या चाहता हूँ कि जो हम गलतियां खाते हैं वो तुमको बता देता हूँ कि ये गलतियां हैं। तुम मानो या ना मानो, इसकी मैं परवाह नहीं करता। क्या गलती है? मैं किताबों के हवाले नहीं देता ना, गीता नहीं पढ़ाता, हमारा ख्याल जो है, हम जो विचार करते हैं, हमारे विचार गलत हैं। हमारे दिलों में किसी से दुश्मनी है, किसी से नफरत है, किसी से 420 है, किसी के साथ हेराफेरी करते हैं, पार्टियां करते हैं। ये हमारी चूक है। इसका क्या नतीजा निकलता है? जिस तरह सपने में तुम सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, सपने में तुम किसी को मुक्का मारते हो, सपने में तुम्हारा हाथ हिल जाता है, हिलता नहीं हिलता? अच्छा, सपने में तुम डर जाते हो, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है। सपने में तुम औरतों का मुझे पता नहीं, तुम आदमी हो, ख्याली औरत बना लेते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। और जो सपने का ख्याल है वो तो तुम्हारे अपने बस में नहीं है। तुम ये अगर चाहो कि अपनी मर्जी से सपना देखो, तुम नहीं देख सकते। तो जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जागृत में जो कुछ हम, किसी से द्वेष है, किसी से नफरत है, किसी से झगड़ा है, किसी के साथ वैर है, किसी के साथ कुछ है, इसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना होगा? बात समझे मेरी बात को? नहीं। तो चूक संवारना क्या है? हम क्या गलती करते हैं? हमारे अपने ही ख्याल से हमको मुसीबत आती है। हमारे ख्यालात शुद्ध नहीं हैं, हम हेरा फेरी करते हैं, हम 420 करते हैं, हम धोखा करते हैं, अपनी मतलब के लिए हजारों चालाकियां करते हैं। तो फिर भाई अगर तुम ये उम्मीद रखो कि ऐसा तुम करते रहो, तो फिर बाबे फकीर के या किसी और गुरु के पास जाकर के तुमको कोई चीज मिल जाएगी, यह गलत है। कोई गुरु किसी को कुछ नहीं दे सकता। गुरु ने अगर देना है तो तुमको ये देना है कि तुम क्या क्या गलती खाते हो। मेरे ख्याल में मेरी बात को आप बिल्कुल साफ समझ गए होंगे। कोई गति का मसला है, और ये वेद कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, मन बदन कर्म से शुद्ध हो। उन्होंने आश्चर्य से कह दिया, मैंने तुमको समझा के कह दिया। तुम आप सोचो, सत्संग में आए हो, किस लिए आए हो? मेरा सिर खाने के लिए आए हो तो अपनी चूक संवारो। चूक मैंने जो गलतियां तुम कर, गलतियां हम क्या करते हैं? हम अपने ख्याल को ठीक नहीं रखते, हमारे मन में शुद्धता नहीं है, हम हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं। तो फिर जैसा तुम करोगे वैसा करोगे। कोई तुम्हारी, कोई गुरु या कोई परमात्मा कोई तुम्हारी मदद नहीं करते। अगर कोई मदद कर सकता है तुम्हारी, तो वो जो पहली कड़ी है, पर पहली कड़ी क्या पड़ी थी? गुरु ने वो दी अजब जड़ी,
अधीन हीन मति मोरी। ऊपर की कड़ी पर शब्द पढ़ा था ना, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। सतगुरु ने वो शब्द पढ़ा। अभी तुमने पहले पढ़ा था कि नहीं? इससे पहला शब्द सतगुरु ने दीनी मोही अजब जड़ी। सतगुरु ने दीनी मोहे गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, तुमने पहले शब्द पढ़ा था कि नहीं? पहला शुरू। गुरु ने मोहे पढ़ के सुना दो तुम, पढ़ेंगे। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। हाँ। सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रस न भरी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। अब तुम सोचो कि वो गड़ी कौन है? मानी पाए वो जो जड़ी है, वो जड़ी है क्या? और जब वो जड़ी मिल जाती है तो क्या होता है? आगे पढ़ो। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। 500 नाग 2500 नागिन, सूंगत तुरत मरी। वो कौन सी चीज है जिसे 5 लाख काम, क्रोध, लोभ, मोह, 25 और प्रकृति है? वो कौन सी जड़ी है? वो जड़ी है तुम्हारी सूरत का अपने आप में शब्द में ठहर जाना। जब तुम्हारी सूरत अपने जिसम को वहां चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? मन ही खत्म हो जाएगा ना। मन का ही सारा तगड़ा है ना, और तो कुछ नहीं और है। तो 5 चोर भी मन के अंदर है, 25 नागिन भी मन के अंदर है। तो इस चक्कर से बचने के लिए क्या है? संत क्या बताते हैं? जड़ी दे क्या प्यार फकीर चंद बेवकूफ, तू मुझे जो पूछता है, तू अपने अंदर अपने ही रूप को, अपने ही शब्द को पूज। तुम सब भूले हुए हो जो फकीर चंद को या किसी गुरु को पूजते फिरते हो। सारी जिंदगी उनको पूजने से तुम्हारा जड़ी नहीं तुमको मिलेगी। तभी चीज तू आती है, क्या लेने आती है मेरे पास? तुम आती हो, क्या लेने आती हो? मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। मेरे कर्म खोटे थे, मैंने महापाप किए हुए थे कि मुझे ये काम मिला, मगर इस काम से मेरा अपना कल्याण हो गया। बात मेरी समझ में आ रही। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर रहा हूँ। मैंने रास्ता साफ कर दिया। किनके लिए? जो अधिकारियाँ, उनके लिए नहीं है। हेरा फेरी 420 करते हैं और मेरे पास आते हैं, उनको क्या फायदा आने का? ये कोई मेला तो नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, ना कोई रासलीला नहीं होती। आप लोग सत्संग में आते हैं। तो वो जड़ी कौन सी है? सूरत का अपने अंतर में अपने ही निज स्वरूप जो निज नाम है उसके साथ जोड़ देने से क्या हो जाएगा? जिस तरह तुम गहरी नींद में चले जाते हो तो सब कुछ, जो कुछ काम करो वो सब खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता? ऐसे जब आप वहां चले जाओगे, जब भवसागर सारे का सारा खत्म हो गया। तो जब तुम भवसागर में हो, शिव संकल्प मत, अपने ख्याल पर ठीक रखो, अपने ख्याल को ठीक करो, विचार ठीक रखो, आशावादी होकर जियो। किसी के साथ है अपनी जात के लिए किसी के साथ हेरा फेरी, धोखा फेर 420 मत करो। अपनी रोजी आप कमा के खाओ, जहां तक हो सके दूसरे का मुताज मत बनो, अपने असूल से जिंदगी गुजारो। ये मैंने समझा, जो मेरी समझ में आया। हो सकता है मैंने जो समझा हो सारा गलत हो। ये कह देना कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही फाइनल है, मैं ये नहीं कहता। मेरा जीवन सारा सच्चाई की खोज में चला गया। मैं देखना चाहता था कि संतों के पास है क्या, क्या देते हैं। जो देते हैं वो क्या कहते हैं? चूक संभालो भाई, तुम ये गलतियां खाते हो, ऐसा मत करो। हमारी गलतियां क्या है? हम ज्यादा विषय भोगते हैं, फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। 420 करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आदमी को सुख नहीं है। जो शख्स रोता रहता है, जो शख्स दुखी रहता है, वो समझ लो उसने पिछले जन्म के बड़े पाप किए हुए हैं।
रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं रोया करता था बसे बगदाद में, प्रेम में रोया करता था। तो ये परशोत्तम दास मेरे साथ थे, इन्होंने दाता जाग कहा कि फकीर चंद में बड़ा भरा प्रेम है, ये आपकी याद में रोता रहता है, हमें भी ऐसा प्रेम बख्शा जाए। इसने लिखा, दाता ने लिखा, जिनकी किस्मत में रोना है वो रोएंगे, तुम फकीर की नजर क्यों करते हो? जिनकी किस्मत में रोना है वो रोएंगे, तुम फकीर की नजर। मैं क्यों रोता था? मेरी छोटी उम्र की शादी में मेरा ब्रह्मचर्य गिरा हुआ था। अब आप मेरे पाप को समझे, छोटी उम्र की शादी की वजह से मेरा ब्रह्मचर्य गिरा हुआ था। तो जिस शख्स का ब्रह्मचर्य गिरा हुआ वो तो हाया करेगा ही, उसके बुद्धि ठिकाने नहीं है। मैंने 2000 पाप किए हुए थे जो मैंने आपको जिनका करता हूँ, इस बात से रोता था। क्यों रोता था? क्यों मैं पापी था, मैंने गलतियां खाई हुई थी, कुछ अज्ञान था, नहीं समझ में आती है, कुछ अज्ञान था, अज्ञान की वजह से और अपने विषय वकाली में रोता था। तो मुझे दाता जो कहा था चोरा से तालीम बदल जाएगा। मैं क्या तालीम बदलना हो सकता है? मैंने जो कुछ कहा हो सारा मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं अपना फर्ज पूरा, मैं आप देखो तुम आए हो, वो आ जाएंगे बाकी। क्या मैं आदमी का बच्चा नहीं? मुझे सोचना नहीं चाहिए तुम्हें जब मकड़ी का दायरा बनाएगा तू क्या दे सकता है किसी को? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तू क्या दे सकता है? मैं आप लोगों को सच्चा ज्ञान दे सकता हूँ, सच्चा राज दे सकता हूँ, सच्चा भेद दे सकता हूँ। काफी है, मैंने ज़्यादा बोल नहीं सकता। आपको मैंने एक नुक्ते की बात बता दी, ज्यादा टकरे मारने की कोई जरूरत नहीं, इस मन को संभालना है बस। इस मन को काबू करना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। राधा स्वामी नक्स अम्बारा अम्बराएं आरती कर American brothers who have come, I will give you satsang in the afternoon. I will say Sharma will translate into English. You understand me? But you are speaking good. Brethren, I think what can we do for them? I ask my conscience. What I can do for you people? So whatever I can do, I will tell you in the evening. You understand? I tell you. Sharma ji, गौरा साहब कहाँ हैं? उनको बुलाओ। हमें यहाँ रेस्ट हाउस भी लिया हुआ है, जहाँ ठहरना हो जहाँ ठहरिए। हाँ, यहाँ ठहरेंगे, यहाँ अच्छा रहेगा, रेस्ट हाउस भी ले लेंगे। अच्छा, तो ऊपर जगह है? अभी ऊपर रखवा दें। कितने हैं ये यूरोपियन? ये 8 हैं जी, सारे मिला के 8 हैं हम। 8 आदमी? 8 सारे, हम हमारे भाग और बहन मिला के। आप छोड़ो ना, 6 अमेरिकन कितने हैं? 6 हैं। हाँ, ऊपर 4 तो बेड हैं रेगुलरली, 2 4 आ जाएंगी। बस ठीक है, बस वो एलेन नहीं आई है ना? एलेनोर है ना? अब एलेनोर कौन है? हाँ, समझे? ग्लोरिया भी आई है ना? I was settling, हैं? एलेनोर ग्लोरिया आई है 400 तक। I know her well. ये फ्लोरिडा से आई है ना ग्लोरिया? अच्छा, फ्लोरिडा। अच्छा, now ग्लोरिया, we will supply you everything, whatever you want. You will have to arrange for the food of your agreement. We do not know what you people eat. Oh, you want me to tell you what they Yeah, I want you to be in charge of food, their hospitality. All right. You want me also to cook it? Eh? You want me also to cook it? Yes. You want me to cook? Cook, yes. Oh, all right. ग्लोरिया को मिल लीजिए, ग्लोरिया। All right. फ्लोरिडा याद है आपको? फ्लोरिडा के घर में, ये फ्लोरिडा में आए।
कल सुबह 6 बजे का मुहूर्त है मॉर्निंग का। ये पिताजी सैली आई है, ये भी फ्लोरिडा में नहीं थी आपको? मीरा मीरा एक और मीरा आई है आपके, मीरा इसका नाम है, आई है मीरा का। जवरा साहब, ये आई फादर आदमी मीरा ना, एलिनोर, do whatever things you require, tell us. He will supply you all. All right. And it is your duty to cook or do whatever. Whatever we will cook here, that will be given to you. But we don't know whether you will prefer that or not. They will eat every vegetarian. I will just contact them when they are free from here, Yes. and whatever their demand is, it will be supplied. Yes. They will supply it. Come on. पिताजी प्रोफेसर है रिलीजन के, वर्जीनिया से प्रोफेसर है रिलीजन डिपार्टमेंट के, बिल रोडनहाइजर। Anyhow, you are now better in health than when I saw you there. Much better. You are much better in health. Thanks to you and your good service to me. इनको कमरा दे दो, इनका इनका चारपाई 2 दे दो उनको। हैं जी, बिछे हुए हैं बिस्तर तैयार है, everything is ready. आपके लिए सेपरेट कमरा है, उसमें लेटरिन भी है, सब कुछ। अच्छा, एक बात हूँ मैं, ये सारे 6 के ऊपर रहेंगे, 4 वहाँ प्रॉपर बेड है, 2 चारपाई दे देंगे इनके लिए। वहाँ सारा इंतजाम है, फ्लश है, बाथरूम है। अच्छा, वो जो बिजली चलती है वहाँ, पानी का इधर ठीक है, हीटर ठीक है। राधा स्वामी दयाल की जय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 11 अप्रैल 1980। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी के शाम के समय प्रवचन। ये प्रवचन विशेषतः डॉक्टर I.H.P. शर्मा तथा उनके साथ आए हुए दाता परम दाता जी के अनुयायी कुछ अमेरिकन लोगों के लिए है। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। परम दयाल फकीर सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर 5/4/81। The discourse of His Holiness Param Dayal Fakir Chandji Maharaj on the 5th of April 1981. आगे हेडिंग है सच्चाई का उपदेश। The title is The Instructions on Truth. कबीर साहब का शब्द है, अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले। There is गति करे न बढ़े। a verse from the great Saint Kabir. O you mind, why are you not having courage? शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, वृत्ति घटे न बढ़े। You always have to pay the good and bad karmas, and it can neither be increased nor decreased. Whatever is your share, you have to bear. होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। When your karmas have determined what you have to endure, then why are you worried? पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करे। This law of karma takes care of all the birds and animals and beasts and human beings. गर्भवास में खबर लेते हैं सब बाहर क्यों बिखरे। When you are in the womb, even then your care is taken. Why do you forget when you come out of it and are born? माता पिता सुख संपत्ति तारा मोह के ज्वाल जरे।
mother, father, wealth, and all your belongings, when you attach yourself to them, then a fire of karma burns you. मन तू हंसन से साहब के भटकत काहे थे. Oh, you mind, is addressing his mind. Oh, you mind, why are you going around, wandering around even the wise, the enlightened people? सतगुरु छोड़ और को ध्यावे कार्य इतने सरे. Although you are wandering around, why does you say that you are wandering with the master thing? Because the real master, highest Satguru, without reaching the highest stage, you will not attain peace. साधुवन सेवा कर्मन मेरे कोटन व्याधि हरे. My mind, I implore you that you should associate with yourself with Sat, with reality, with ultimate reality Dham. कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज में जीव चरे. That great poet Kabir says, "Oh my dear good people, listen to me. If you follow this advice, you will attain perfection in a very simple way." राधा स्वामी, इस शब्द की आखिरी कड़ी में लिखा हुआ है, साधुवन सेवा कर्मन मेरे कोटन व्याधि हरे. Now, His Holiness says that in this verse, it is said that, "Oh my mind, you should serve the sadhu, serve the sadhu, sadhu, hermit, serve the sadhu, the hermit, then you will be able to attain." No. Kotin vyat kare. Then you will be able to get rid of from the mistakes which you are doing. Millions of sufferings. मेरे दिल में सवाल पैदा होता है, क्या ये ठीक लिखा हुआ है? The question arises, is it true, whatever is written here is true? And the answer is yes. Kabir says, if you want, serve the sadhus, gurus, and your all mistakes which you have committed, everything will be, you will be saved. Now I ask myself, is it fact? Answer is yes, it is true. जो आदमी शांति की इच्छा रखता है उसको सत्संगी, और जो मन का साधन करता है उसको साधु कहते हैं. A person who seeks after peace is called a Satsangi. Devotee. दूसरा क्या बता दें? और जो मन का साधन करता है. And a person who follows the discipline of mind, who meditates, is called hermit, sadhu. जो बारी कपिल वाला बन जाता है, काट छाट करता है, जैसे वेदांती, उसको हंस या परमहंस कहते हैं. A person who enters into the subtleties of thought, like a person, like a philosopher of Vedanta, he analyzes and goes deep into the subtleties of truth. He is called Hansa. Paramhans. आगे जो प्रकाश और साधन में शब्द में चला जाता है उसको संत. और जो A person who goes to the stages of light and sound, he is called saint. और जो इससे परे चला जाता है उसको परम संत कहते हैं. And one who goes even beyond this stage, he is called Param Sant, Para Saint. मैं इस वाणी को सच्चा मानता हूँ. क्यों? I accept this to be true. What is the reason? Why? मैंने आप लोग सत्संगियों की सेवा की तो मेरे ब्याज चल गए. यानी मेरी I served you, Satsangis, devotees, and therefore all my sufferings, all my karmas, in one sense, were exhausted. यानी मेरी गलतियाँ, अज्ञान और भ्रम चले गए. In other words, my own illusions, mistakes disappeared. The real knowledge came to me. And whims also, they all disappear. Whims also, he says, the whims of mental vision also were exhausted. आगे
दुनिया में साधु सेवा कुछ और समझी हुई है कि people do not understand the meaning of serving the hermit or sadhu. वो समझते हैं कि साधु आया उसको रोटी खिला दो, कपड़े पहना दो, उसे पैसा दे दो, ये साधु की सेवा है. They think that when a saint or a guru comes, you serve him, give him food, give him clothes, and give him dollars, give him money. And that is the service. That is service. That's not the service. मैं साधु सेवा कुछ और ही समझता हूँ. But I think that real service of the sadhu is different. It's different. साधु क्योंकि मन में साधन करता है, उसकी संगत में बैठकर उसके तजर्बों से, उसकी बातों से आदमी जो समझ हासिल करता है, उसको मैं सच्ची साधु सेवा कहता हूँ. Sadhu is one who attains perfection and through his discipline. I think that the real service of the sadhu is to understand what he means by his word and to practice. Sadhu, devotion, they explain their experiences to their master. And from that man who listens to them, he gains the knowledge. That is the real service. मैंने क्या समझ पाई? What have I understood? मुझे मन और माया के रूप का ज्ञान होकर असलियत का अनुभव हो गया. After understanding the real nature of Maya, the illusory material reality, I am realizing what is beyond it. I have understood. ये मैं कैसे कहता हूँ? Why do I say so? रात को एक इंजीनियर मेरे घर आया. Last night an engineer came to my house. वो छोटा बच्चा था, उस वक्त से मैं उसको जानता हूँ. I knew him ever since he was a kid. उसकी शादी भी मैंने ही कराई थी. I had myself arranged his marriage. अब वो बड़ा इंजीनियर हुआ है. Now he is a very well known and advanced engineer. लड़की के बाप ने मुझे कहा था कि रिश्ता करा दीजिए. मैंने रिश्ता कराया था. The father of his wife had suggested that he should get his daughter married to this engineer, and he was instrumental in that. उसकी औरत और बच्चे भी आए हुए थे. His wife and children also accompanied him last night. वो कहती है, बाबा तू मेरी रक्षा करता है. His wife said to His Holiness, "Oh Baba, you protect me, always protect me. You are protecting me." कैसे करता है? How does he protect? एक उसने कहा कि कुछ दिन हुए उसके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ. She related a story. She said that a few days ago my image, the root of the form of His Holiness Fakir Baba appeared in her mind. In her mind. और कहा कि तुम पर मुसीबत आने वाली है, घबराना नहीं, तुम्हारी रक्षा होगी. And told her that some calamity is bound to come, but don't be disturbed, don't be afraid, you will be protected. वो बेचारी घबराई. She got disturbed. वो कहती है मेरा खामन तो बाहर रहता था, मेरे बच्चे थे. मैंने कहा खबर नहीं क्या मुसीबत आएगी. She said, my husband stays out of town and I have got little children. I don't know what will happen to me. She was frightened. मैंने आपकी फोटो टेलीविजन के पास रख दी और हर वक्त उसको देखती और मत्था टेकती रहती थी. I kept your picture by the side of the television. I always bowed to it and I always thought about you and looked at it constantly. रात को बिजली गिरी, सारा एरियल जल गया और छत काली हो गई. At night there was thunder and the lightning struck the house and Ariel was burnt. Ariel was burnt. और छत काली हो गई. And the whole ceiling was blackened. मैं और मेरे बच्चे टेलीविजन के करीब ही थे. Myself and my children were very close to the television at the time of lightning. मगर बिजली बजाय फिर हमारी तरफ आने के मुखालिफ सिम्मत को मोड़कर बाहर निकल गई. The current of that lightning, thunderbolt, instead of coming towards us, turned backward, other direction. टेलीविजन बच गई और हम बच गए. Television was saved and we were all saved.
मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या तूने उसको कहा था कि तेरे पर मुसीबत आने वाली है? Now His Holiness said, I asked my own conscience. Did she tell you, Did I go in her mind in the dream, I told? to warn her about the calamity? Yes. मैं नहीं गया, मुझे खबर तक नहीं। I assert that I did not go and I was not aware of it at all. ऐसे रोज मुझे मिसालें मिलती हैं। Such cases are reported to me every day. मैं तो गया नहीं, फिर जाता कौन है? I know that I do not go. Then who goes there? Who goes there? ये हर शख्स का अपना ही मन का विश्वास है। This is the result of the inner faith and of everybody's Man's mind. own faith. One's own faith. जिसका जहाँ जहाँ जैसा विश्वास और श्रद्धा है, जो जो जिसके कर्म में होना होता है, वो उसके सामने आ जाता है। Wherever a person has got faith, on the basis of that faith and whatever karmas he already has in store for him, according to that, the events take shape. आगे उस लड़की का मुझ पर विश्वास है, उसके विश्वास ने उसके अंतर मेरा रूप प्रकट किया। Because that girl has faith in me, therefore her faith made my form appear in her mind. Well, Americans, look to my face. You have come to me. I am the liberator. I don't bring men in my clutches for my personal name, fame or wealth. You have come, listen to me. आगे एक और मिसाल सुनो। Now there is one more case, example, which you must listen. एक शख्स मुझे लिखता है, A person has written a letter to me which is as follows. परम पूज्य पिताजी करबद्ध राधा स्वामी, पढ़ते जाओ। Most respected Father, I give my obeisance to you. समाचार ये है कि मैं आपका दास 6/81 को बीमार हुआ था। I want to inform you that I am your humble servant and I fell ill on the 6th of January 1980. और आपके पास भी आया। I also came to you. आपने आशीर्वाद दिया था कि ठीक हो जाओगे। You had blessed me by saying that I would be all right in health. क्योंकि मुझे डॉक्टर ने टीबी की बीमारी घोषित की, जिसका 3 माह का कोर्स पूरा कर लिया था, फिर भी दर्द नहीं है। The doctors had diagnosed that I was suffering from tuberculosis, and after having been treated for 3 months according to their prescriptions, I did not get relieved. मैंने लगभग 11,000 रुपया डॉक्टरों को दे दिया और मेरी हिम्मत टूट गई। I spent about 11,000 rupees on my medical treatment to the doctors, but I did not get any relief. हिम्मत टूट गई और सोचा कि अब इलाज नहीं करवा सकता। I became absolutely disappointed. I had nothing, no courage, so I didn't know what to do. उस दिन मैं आपकी याद में खूब रोया, मैं खाना भी न खा सका। That day I cried bitterly, meditating my mind on you, and I could not even eat anything on that day. दिल में एक यही तड़प थी कि कब आपके चरणों में पहुंचकर दम तोड़ लूं। The greatest longing I had in my mind was that somehow I should reach and die at your feet. माँ बाप के मजबूर करने पर 4/2/81 को फिर एडमिट हुआ, पर आराम नहीं आया, परंतु तकलीफ बढ़ी। On account of the insistence of my parents, I again got admitted into the hospital on the 4th of February, but I did not have any improvement. 16/2/81 को जबरदस्ती छुट्टी लेकर घर आ गया और 17/2/81 के दिन वो रात आपकी याद में रोता रहा। On the 16th, I came out on a kind of parole, and on 17th I again went on crying, longing for you. और यही सोचा कि अब दुनिया में मेरा और कोई सहारा नहीं है। Now I
only realized that I had no other refuge in the world. 1881 को रात को सुपन में आपने दर्शन दिए और कहा कि बेटा घबराओ मत। On the 18th of February, you appeared to me in my dream and you said, my dear son, don't worry. आगे अब तुम बहुत हार चुके हो और काफी कष्ट पा चुके हो, अब मेरी मानो। Now you have become absolutely helpless and now I want you to follow my advice. रात्रि को जब सब सो जाए तो एक रस वाला नारियल लेकर और उसके ऊपर मौली लपेट कर कुंभ के ऊपर रखकर मेरी फोटो। Now when everybody is asleep, you take a particular coconut with hair on it and tie a particular thread around it and put it on a pot with water, a jar. मेरी फोटो के सामने घी का दीपक जलाकर put it before my picture and burn light with pure clarified butter near my picture. और ओम नमो शिवाय का जाप 1100 बार करना। And recite Om Namah Shivaya mantra for 1100 times. तथा तारों की छतर छाया में नारियल व दीपक जल प्रवाह कर देना, तुम ठीक हो जाओ। Then you should take that very coconut and the lamp and you let it flow into the water when there is no sunlight. तुम ठीक हो जाओ। You will be perfectly happy. मैंने ऐसा ही किया और ठीक हो गया। I followed that advice and now I am absolutely healthy. पर आप यही कहेंगे कि मुझे कुछ भी पता नहीं। But you will, as usual, you would say, I do not know anything. ये चिट्ठी तुमको पढ़कर सुनाई, अब तुम सोचो मैं अगर सच्ची बात न कहूँ तो ये शख्स आके मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। Now I have read this letter to you, His Holiness is saying, but if I do not speak the truth, don't you think that you will come and serve me for whole life, be at my service? मुझे धन देगा या नहीं देगा? Will He not give me all money and everything? जब मेरी आत्मा मानती है कि मैं उसके अंदर नहीं गया, मैंने उसको नहीं कहा, तो अगर मैं उससे सेवा लेके खाता हूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा? When my conscience says that I did not go into his mind, appear into his mind, and if even then I accept his services and money, will it not be sin for me? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर इंसान जो कुछ है तेरे अपने ही विश्वास और श्रद्धा में है। What I want to communicate is, Oh American gentlemen, listen to me. whatever, oh man, whatever is there, it depends upon, whatever you get depends upon your faith. Faith. अगर कोई तकलीफ आए तो अगर सच्चे दिल से कोई पुकार करता है तो जो वो मालिक है सुनने वाला वो सुनता है। Whenever a person is in great calamity, distress, and if he or she prays very earnestly from the core of the mind, heart, then that Malik, that Master, that reality, that being does have. आगे और कोई न कोई तरीका उस तकलीफ को दूर करने का पैदा कर देता है। And that power creates some means of removing that very suffering or longing or want. आगे इंसान अगर सच्चा होके मुसीबत के वक्त में पुकार करे तो उसकी सच्चाई की पुकार से उसके कर्म कट सकते हैं। If, this is wonderful final conclusion, if man purifies himself and honestly longs and prays, then his prayer only under those circumstances is bound to be heard and remedy is to be provided. कर्म कटे के नहीं कटे, Karmas are at that time the karmas are paid off, they are burnt off. अच्छा कर्म कटे के नहीं कटे, देखो तुम्हारे सामने चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई है। Now, am I right in saying, did the karmas of that man
not burn, they do not efface away. The letters tell you, give you the reply. मैं तो इस शख्स को जानता नहीं कि ये है कौन. I do not know who that person is. अगर सच्ची बात पूछते हो तो मैं कसम से कहता हूँ, मुझे कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूँ, मैं नहीं जानता कि ये कौन आदमी है. If you ask the truth and I don't want to tell lies, I tell a lie, I will suffer from the greatest disease of the world, but I do not know this man honestly. कब से ये मेरा ध्यान करता है मुझे नहीं पता. I do not know since when did he turn towards me and thought of me or meditated on me. तभी तो मैं कहता हूँ, इस वक्त मौजूदा मजहबों और पंथों में हम बेवकूफ और अनाड़ी आदमियों को पागल बनाया हुआ है. That is why I say that the present day religion, sects and these faiths, they have made fool of us. और पागल बना के हमको अपने दायरे में फंसाया हुआ है. On account of deluding us, they have somehow caught us in their own net. सनातनियों ने अपने दायरे में फंसाया, मुसलमानों ने अपने दायरे में फंसाया, सिखों ने अपने दायरे में फंसाया और राधा स्वामियों ने अपने दायरे में फंसाया. The Sanatanist sect has tried to bring the people in their net. The Sikhs have tried to entice and deceive their own sect. Muslims have done the same thing, and the Radha Swami also have tried to trick the people and bring them in their own net. इन्होंने सच्ची बात हमको नहीं बताई. Because they have not spoken the truth, they have not absolutely uncovered that truth which is original. भोले भाले जीवों को सच्चाई किसी ने बयान नहीं की और किसी ने राज नहीं दिया, बल्कि हमको अज्ञान में रख कर लूटा गया. These ignorant people were always deceived, and nobody revealed the truth to them, and on account of the ignorance, they have been exploited. जब तुमको दुख आए तो क्या करो? When you are in trouble, in misery, what should you do? सच्चे बनकर अपने अंतर बैठ के उस मालिक के आगे पुकार करो. Be true, absolutely, and sit down and pray to that Supreme Lord. जब तुम पुकार करोगे, वो किसी न किसी शिकल, किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करेगा. When you pray earnestly, He will help you in some form or the other. जिस तरह इस आदमी को बीमारी थी, मैं तो गया नहीं, क्योंकि उसके दिल में सच्ची तड़प थी अपने दुख के दूर करने की, तो कुदरत ने मेरा रूप धरकर उसको गाइड कर दिया. The case in point is of this person who has written a letter, because he had longing and true longing, and because he had faith in my form, and therefore his work was done, his suffering was removed in the form, in the way that my form helped him. अगर मैं जाता तो ओम शिवाय नमः न कहता. If I had gone in physical form, I would not have suggested Om Namah Shivaya. Not even physical form, but even if mental or spiritual form, had I gone there, I could not have told him, repeat Shivaya Namah. I would have told him Radha Swami and anything. मैं उसको कहता राधा स्वामी का जाप करो. I would have suggested to him to repeat Radha Swami. तुम सोचो, आंखें खोलो, मैं क्या कहना चाहता हूँ. Now listen to me. Open your eyes. What I want to tell you. आगे. मेरे भाव को सोचो, क्या कहा मैंने. My intention को watch करो. Watch my intention. What I want to convey to you people. हाँ. तो वो मालिक एक ताकत है, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसके हैं. That Supreme Being is one power. He has no particular form. Every form is that. हाँ. एक रूप मान लो. You should accept one form. One form. जिस रूप में तुमने माना हुआ है, उसी रूप में वो तुम्हारी मदद करेगा. He will help you in that very form which you have accepted earnestly. Yes. न कि ये कि फकीर चंद या कोई और गुरु बाहर से आकर तुम्हारी मदद करता है. It is wrong to think that
the form of Kirtan or any other guru personal form. Any deity or anything, nobody comes from outside. Deity avatar. Okay. यही भ्रम है दुनिया को। This is the greatest illusion of the world. हमको सच्चाई नहीं बयान की और इस वजह से हम रुक गए। Nobody has uncovered this truth to us, therefore we have been exploited. And we have been exploited. तुम देखो तो सही, देखते नहीं हो, किसी के अंदर देवी प्रकट हो गई, अब वो झंडा लिए जाता है। You might have seen some people feel that the goddess appeared in him, and they take the flag of the goddess and go on saying Devi Jai Devi Jai Mata. Okay. कितने आदमी जाते हैं? दुनिया जाती है कि नहीं जाती? Millions of people go to the temple of the goddess. You can see yourself. कोई चिंतपूर्णी जाता है, कोई जीवसिद्ध जाता है। स्टार्ट करके जाओ। हाँ। There are different places where they go. Chitpurni is one place, and other places of centers of energy are there. People go to those places. कोई डेरे बरभाग सिंह जा रहा है, कोई ननकाने साहब जा रहा है। There are so many names, Nankana Sahib, and there are Different places they go. कोई मक्के तो कोई हरिद्वार जाता है। some people go.